ਉਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। जम्मू विच दरबार मूव के बाद कामकाज के पहले दिन उमर अब्दुल्ला ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों के जवाब दिते, जिस विच अहम जवाब ये रहा कि उमर ने मन्निया कि मोदी का असर जरूर है, पर उमर अब्दुल्ला ने देश विच मोदी की लहर की गल तो इनकार किया है। I have nothing to do with any third front. The National Conference is a committed constituent of the UPA, and that is how we see our future. As far as a Modi wave is concerned, I think a Modi wave would be a bit of an exaggeration. Also, it would be wrong on our part to deny any influence of Modi in the election. But I wouldn't go so far as to say there is a wave. There is an effect of Modi. And that effect may not so much be on the average voter, but it is visible amongst the cadre of the BJP. To the extent that that has an impact on the election, we will have to wait and see. But I won't use the word wave, definitely not. उधर कांग्रेस वालों एग्जिट पोल ते पाबंदी की मांग नूं लैके उमर ने कहा है कि वो अपनी सहयोगी पार्टी की मंशा नाल कोई इत्तेफाक नहीं रखते अते ना ही किसी तरह की कोई टिप्पणी करना चाहते ने। I have no opinion on what my allies feel. It is for them to form their own opinions as far as what the National Conference feels. For us, opinion polls rarely are conducted in Jammu and Kashmir, and therefore this is more a theoretical question rather than a practical one. The day I feel that meaningful opinion polls are conducted in Jammu and Kashmir and they have a bearing on the election, I'll form an opinion. Till then, we are a regional party. For us to form an opinion on something that matters in the rest of the country and not here, I don't believe is necessary. जम्मू कश्मीर के भारत विच रलेवें ते उमर अब्दुल्ला ने अपने विवादमय बयान ते सफाई दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का एक अनिखड़वां हिस्सा है। Look, Jammu and Kashmir acceded to India. Jammu and Kashmir is a part of India. There is no two ways about that. Now, there may be differences in the way Jammu and Kashmir acceded as opposed to other states, but that does not call into question our accession. Jammu and Kashmir acceded to India. But and is it integral part of India? if you accede to India, are you not an integral part of India? Of course you are. उधर उमर अब्दुल्ला ने युद्ध विराम के उल्लंघना ते कहा कि भारत पाक सेना विचकार फ्लैग मीटिंग के बाद युद्ध विराम उल्लंघना ਦੀਆਂ घटनावां ते विराम लगन का आसार है। होने के लिए तो सीजफायर वायलेशंस हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह की बातचीत हमारे फ्लैग मीटिंग में हुई है, लगता नहीं है कि दोबारा उस स्केल पे जो है सीजफायर वायलेशंस जो हैं वो किए जाएंगे। ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।